जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ द स्पेस, एरिया or region in which the electric effect can be felt. Such space, region or area is known as electric field. The electric field strength or electric field intensity, it is measured by the electric force acting on unit positive charge when placed at that point. Okay, so the electric field intensity or the electric field strength, and generally we call it only electric field at a point, is defined as the electric force per unit charge as at that point. Suppose Fr is the force acting on a charge Q naught when placed at position R, then electric field E at that position R will be given by this equation: E is equal to F force, F vector divided by Q naught, the charge, the force per unit charge. Obviously, electric field intensity or electric field strength, it is a vector quantity and it is along the same F, the force acting on the positive charge. Okay, its unit will be Newton per coulomb, Newton for force and coulomb for charge. The dimension formula can be calculated by writing the dimensions of force, which is mlt minus 2, and divided by the dimensions of q naught, which is at, a for current and t for time. So the dimensions of E turns out to be mlt minus 3, a minus 1. This is the dimensions these are the dimensions of electric field. Okay, so here description देखें, E is the electric field at position R and Fi is the force on the negligibly small positive charge Q naught when placed at R. So electric field is the force per unit charge. Okay, now let us try to find out the electric field due to point charge. Suppose we have a point charge capital Q and we want to find electric field at पोजीशन आर वेक्टर. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. व्हाट विल डू, वी पुट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट एट दिस पॉइंट. Okay, we calculate the force acting on q naught and then divide it by q naught to calculate the force acting per unit charge. So by definition, the electric field ER will be F force and divided by q naught. So 1 by q naught force, the value of force can be written by the Coulomb's law, 1 by 4 pi epsilon naught product of two charges q1 q2 by the square of the distance between them r square. R cap is a unit vector directed along capital Q to q naught, means along the r vector along right side. So this E is also along right side. E is also along right side, capital Q, small q and r cap. सो दिस क्यू एंड क्यू नॉट, नॉट साइन यहाँ पे मिस हो गया है. क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे. यू विल गेट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप. ओके, क्यू by r square r cap. So the formula for electric field due to single charge is 1/4 pi epsilon naught q by r square. Okay, r cap gives the direction. It is also clear that if capital Q is positive, this E will be away from Q, and if Q is negative, it will be towards Q. It will be towards Q. Okay, again it is also clear that if this for given charge E is isolated charge, single charge, E is proportional to 1 by r square, means E decreases with increase in square of the distance from the point charge. So this is about the electric field due to point charge. Let us see electric field due to system of charges. What is the electric field due to system of charges? Okay, so we know that electrostatic force, it obeys superposition principle.
So if you want to calculate the electric field due to a system of charges, then by superposition principle, this electric field will be equal to the vector sum of electric fields due to all the individual charges. Due to all the individual charges. ये एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम में वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेज हैविंग चार्ज Q1 at position R1, charge Q2 at position R2, and charge Qn and so on at position Rn. We want to find out the electric field due to this system at point P. The point P has position vector or not. Okay, so by superposition principle, the electric field due to system of charges is equal to the vector sum of fields due to all the individual charges. Therefore, the electric field at point P due to this system E will be written as E1 plus E2 plus and so on En, where E1 is the electric field due to Q1 charge, E2 is the electric field due to Q2 charge, and En is the electric field due to nth charge. Okay, we are calculating the electric field at point P due to all these charges. Okay, so this E1 just we have learned that we will apply here the formula of electric field due to point charge 1 by 4 pi epsilon naught point charge by the distance square of the distance where we want to calculate the electric field, and the direction position unit vector to show the direction. So E1 can be written as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R01. What is R01? R01, it is the distance फ्रॉम Q1 टू P पॉइंट, Q1 टू P पॉइंट. सो इस डिस्टेंस का स्क्वायर रखेंगे एंड द यूनिट वेक्टर R01 कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन Q1 to P point, Q1 to P point. Similarly, E2 can be written as 1 by 4 pi epsilon naught charge Q2 by square of the distance R naught 2 square. Okay, R naught 2 is the distance फ्रॉम Q2 टू P पॉइंट, Q2 टू P पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन है. एंड द पोजिशन वेक्टर R02 कैप, it is along Q2 to P point, position vector along Q2 to P point. Okay, similarly we can write the other electric field due to adult charges Q3, Q4 and so on. And finally the electric field due to nth charge En 1 by 4 pi epsilon naught Qn by R naught n square R naught n cap. ओके, इनको फिर हम इसमें से जो भी कॉमन है उनको बाहर ले लेंगे. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n क्यू आई बाई R0 आई स्क्वायर एंड R0 आई कैप. This is the expression of net electric field due to this system of charges. Okay, where R0I is the separation between ith particle and P point where you want to calculate the electric field, and R0I cap is a unit vector along ith particle to point P, along ith particle to point P. So this is the electric field due to system of charges. What fact we have to keep in mind, that net electric field due to system of charges is equal to the vector sum of electric fields due to all the individual charges of the system. Okay, now come on the next point, electric field lines. Dear students, electric field lines, these are used to show visual representation of electric field around a charge और इन अ गिवन एनी गिवन रीजन. ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि देख के आपको कुछ आइडिया लग सके कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका इलेक्ट्रिक नेचर कैसा है. सो व्हाट वी राइट इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are the curve such that tangent to it at any point gives the direction of net field at that point. These lines you can write in formal definition of electric field lines. These are the curve such that tangent to it at any point gives the direction of net field at that point. What are the properties of electric field lines? The properties are, first, they are continuous curves but do not form closed loop. बहुत important point है. These are continuous curve, ये continuous हैं. Okay, these are continuous curve.
बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, लेकिन क्लोज लूप वो फॉर्म नहीं करेंगे. वी हैव लर्नड इन क्लास 10th दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है कि वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है. ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मैग्नेट के केस में आपको आइसोलेटेड नॉर्थ या आइसोलेटेड साउथ नहीं मिलेगा. जब भी मिलेगा पेयर में मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों मिलेंगे. इसी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं. आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल to south pole, and inside the magnet they travel from south to north. So say they form closed loop. But in electrostatics, since isolated charge exist, अकेला पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा और अकेला निगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा. इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती. कंटिन्यूस तो हैं लेकिन क्लोज्ड नहीं है. दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज. कहाँ से निकलेंगी, आप रिकॉल द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. सो द डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ F. ओके, सो इस वजह से दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज. ओके, क्यों स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा भाई? Suppose you have a positive charge. If you put another positive test charge q naught, then this source charge q will repel q naught, अगर यही q निगेटिव होता तो q naught को क्या करता, अट्रैक्ट करता. इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, क्योंकि वो क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल कर रहा है, और निगेटिव चार्ज है तो उसकी ओर होगी क्योंकि वो क्यू नॉट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. दैट इज वाई इट इज रिटन एट दे स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज. टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. ये अक्सर पूछा जाता है, कभी भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती. ये ऐसा इस वजह से क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है. इफ़ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट विल गिव field at that point, the net field at that point. Okay, suppose let us assume that the two field lines cut each other at some point as shown in the figure. So what will happen, you can draw two tangents in that will show the two direction of electric field at same point. Since electric field is a vector quantity, therefore in changing the direction itself is the change in the electric field. आपने वेक्टर कोई क्वांटिटी लिया है तो आप अगर उसकी या मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो या दोनों बदल दो, इन तीनों केसेस में वो वेक्टर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दी जा रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल. एट वन प्लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू वैल्यूज. डिड यू गेट इट? दे विल नॉट हैव टू. अगर मान लो कभी किसी एक पॉइंट पे दो उसके नज़दीक में दो चार्जेस रखे गए हैं और ये दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे भी रहे हैं, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों फील्ड हमेशा क्या हो जाएंगी, वेक्टरली ऐड हो जाएंगी, एंड यू विल गेट अ नेट रिजल्टेंट फील्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. So this is why it is written as two field lines never cross each other, because if they did so, the two tangents at point of intersection give two direction of electric field at same point, which is not possible. So two field lines never intersect each other. ये आपको ध्यान रखना है, जब आप डायग्राम बना रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो कोशिश करनी है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट न करें, अदरवाइज that will be the violation of this property. Now next property, the degree of closeness of field lines is a measure of field strength. Means degree of closeness means जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडर होंगी, थोड़ा नज़दीक ज़्यादा होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा रिलेटिव टू द रीजन वे इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेयरफाइड. जहाँ पे वो दूर दूर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा. Is it okay? So the degree of closeness of field lines is a measure of electric field strength. Crowder the field lines, stronger the field, and rarefied the field lines, weaker the field. So there are some diagrams to show the electric field lines due to different
टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको दिखाया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, दे डेली आउटवर्ड निकलेंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, एंड्स एंड इन्फिनिटी। सिमिलरली इफ देयर इज negatively charged isolate charge, then the electric field lines will start from infinity and they will end at this negative charge। डायरेक्शन देखिए दोनों के अपोजिट है, अक्सर पूछा गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ आइसोलेटेड चार्ज। ओके, सिमिलरली दिस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ द टू पॉजिटिव चार्जेस। देखो ये टू, सिंस these two positive charges are what they are repelling each other, so this repulsion is shown by lateral pressure due, okay, lateral pressure on the field lines, these both are positive। what will happen if both were negative? बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बनेगा, केवल जो एरो की डायरेक्शन दी गई है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं। Now let us see about the electric flux. Electric flux. Before learning electric flux, first we should know the area element vector. Okay, student, we have learned that area is a scalar quantity, but sometimes when the direction of area matter, we associate a vector with any given area. Okay, suppose this triangle, it is a given area represented by delta s, then the area element vector means the vector associated with this area can be represented by this top equation, delta s vector is equal to n cap into delta s. Delta s is the magnitude of that vector, that area, sorry, delta s is the magnitude of that area, and n cap is the unit vector along outward normal, unit vector along outward normal. So the area element vector associated with any given area is a vector whose magnitude is equal to the magnitude of given area and the direction is along outward normal. The direction is along outward normal. Suppose this area is on the paper of your copy, then the area element vector will be directed along upward direction. ये ऊपर की ओर directed होगा. Is it okay? So this is the concept of area element vector. Now come on the topic, what is electric flux? Electric flux is represented by delta phi, and so any area element in electric field E is defined as delta phi is equal to E dot delta S, means dot product of electric field vector and area element vector. You know that A dot B, the dot product of vector A and vector B is equal to AB cos theta, magnitude of A into magnitude of B and the cosine of angle between them. Therefore, the electric flux through any area element delta S in an electric field E, delta phi is equal to E dot delta S is equal to delta S cos theta. This is the formula for the electric flux. Since it is the dot product of two vectors, therefore electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. Its unit will be Newton meter square per coulomb and dimensions will be ml cube t minus 3 a minus 1. ये डायमेंशंस कहाँ से आई? ई की डायमेंशंस हमें पता है कि ई की डायमेंशंस एम एल टी माइनस 3a-1 होती है, उसमें आप एरिया की डायमेंशंस L2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो यू विल गेट दिस डायमेंशन ml क्यूब t minus 3a-1. So electric flux is a scalar quantity. What is the significance of electric flux? Electric flux is a measure of please be careful about the word. It is a measure. It is not actual. It is the measure of number of electric field lines crossing the given area. It is a measure of number of
electric field lines crossing the given area, this is the electric flux. Okay, now see the some diagrams. First see this diagram. Okay, where a line is drawn only, and this electric field is from left to right, and this line is drawn. So imagine that the electric field lines are from your left side and they are going to your right side. Okay, and they are equispaced. Equispaced means जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि डिग्री ऑफ closeness of electric field lines is the relative measure of electric field strength. So if the electric field lines are parallel and equispaced, it means the electric field is uniform, means same direction, same magnitude. So this shows the reason of uniform electric field. Suppose you kept um, what a area, planar area having delta s, okay, such that the area of plane is perpendicular to E. Area of plane is perpendicular to E. ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ प्लेन. ये एरिया क्या है, ई के नॉर्मल है. तो जब एरिया ई के नॉर्मल होगा और हमें पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द एरिया इटसेल्फ. तो इसका मतलब व्हाट विल हैपन इन सच टाइप ऑफ केसेस व्हेन ई इज नॉर्मल टू एरिया, देन E will be parallel to area element vector delta S. Imagine this. Okay, the area is normal to E. In that case, the area element vector will be parallel to E vector. So theta will be 0. In this case, the formula for flux, electric flux, delta phi will be equal to E ds only. E ds cos theta की जगह cos 0, cos 0 1, so E ds only. So this is the case when the flux is maximum. The flux is maximum. Now see this one. Okay, the electric field lines are going from left to right, and the plane of given area is along E, then the area element vector which is along outward normal, so it will be in the upward direction. Suppose the E is lying in the plane of your paper and the area given is also in the plane of paper, then this area element vector will be vertically upward. ओके, ये पॉइंट से सो गया गया सर्किल के अंदर पॉइंट मीन्स एरिया एलिमेंट वेक्टर क्या है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल. सो इन दैट केस E is parallel to area, but E is perpendicular to delta S, area element vector. E is perpendicular to delta S, area element vector. So here we use theta is equal to 90 degree. So delta phi electric flux will be equal to E dot delta S, means E delta S cos 90 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है, then the flux through this area will be 0. You must imagine it. In this condition, the electric field lines passing through the area is 0. Okay, here again this is the general diagram. We kept a area delta S in electric field such that its area element vector makes angle theta with a vector, then the electric flux through this one will be E delta S cos theta. E delta S cos theta. Now we can use the formula learned to calculate these things. If electric field is parallel to delta S, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग डेल्टा एस मतलब एरिया एलिमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं. सो इफ ई वेक्टर इज पैरेलल टू डेल्टा एस वेक्टर फर्स्ट केस, देन थीटा विल बी 0 एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई लिखना चाहिए. डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 0 is equal to E delta S. This is the maximum flux. If the electric field is perpendicular to second case, if electric field is perpendicular to delta S, then theta will be 90 degree and then delta phi electric flux E delta S cos 90.
cos 90 की वैल्यू 0, so electric flux is 0. Again, if E is opposite to anti-parallel to delta S, then theta will be 180 degree, and then phi is equal to E dot delta S cos 180. So this is equal to minus E delta S, negative flux. Okay, negative flux. So this is the case of electric flux in different angles. ओके, फॉर डिफरेंट एंगल्स बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर. यहाँ पे आपको क्लियर है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेज. ओके, नाउ what we have learned about the electric flux through a given surface, through a given area element, small area element. Suppose we want to calculate the electric flux through a given closed surface. Okay, yes, closed surface S. Then we write the expression phi is equal to E in closed integration. इंटीग्रेशन के साथ एक क्लोज सर्किल बनाया गया है, क्लोज इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, E डॉट डी एस. इसकी मीनिंग क्या है? फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द small flux d phi through small area ds, and is equal to E dot ds. Now this E dot ds is integrated over the entire surface S. That is why the total electric flux through any surface, closed surface, electric flux through any closed surface S is equal to closed integral of E dot ds over the whole surface S.